proud to have arranging the first pediatric fundamental critical care support in Shifa International Hospital in this region. So welcome you all. First of all, I'd like to introduce our instructors, Dr. Naveed, Dr. Awais and Dr. Abid. They are coming from Khan University Hospital, Karachi. Dr. Bushra Saeed is joining us from Lahore Children's Hospital. Dr. Asim, me, Dr. Ataullah, and Dr. Nazia will be instructors from Shifa International Hospital. Objectives of the course is basically, this course is meant for those who are looking after pediatric patients. Okay? So, purpose is कि आप prioritize करें assessment जो भी आपकी critical patient है वो early identify हो जाए, early treatment start हो. ठीक है? We are not expecting you कि हम आपको like PICU teach करें. That's not the purpose of the course. ठीक है? आप identify कर लें, आप उस वक्त timely intervene करें, and then you refer it to a tertiary care जहाँ पे ICU हो. ठीक है? तो that is basically the purpose of the course. आप ये ना expect करें कि आप यहाँ से निकलोगे आप intensivist हो जाओगे. ठीक है? That's not the purpose of the course. तो critically ill infant or injured infant को आप timely assess कर लें. Select appropriate diagnostic test अगर जो आपके पास right away available है. ठीक है? Identify and respond to significant changes in unstable pediatric patients. Recognize and initiate management of the acute life-threatening conditions. ठीक है? The mainstay कि बस आपने जो भी critically ill है उसको identify किया. And the need for expert consultation if you think हाँ उसको फिर consult चाहिए or then you need to refer so that you need to do it timely. अच्छा, each of the presentation उसमें आपको कुछ studies मतलब case studies आपको बताएंगे. ठीक है? And then we'll expect कि जी कुछ आपकी तरफ से हम कुछ आप अपनी जो इतना आपको आता है वो आप बता दें. ठीक है? And then some of it we will teach it also. ठीक है? तो it will consist of case studies. Presentation में भी case studies है and then skill station में तो हैं ही सारी case studies. ठीक है? तो it basically consists of all these case studies. जैसे for example, a post-operative 4 years old child who becomes febrile and agitated with respiratory stridor. This will be a case which will be discussed कि जी आपने इसको कैसे approach करना है. Identification, early management आपने कैसे करनी है. Same is a 12 years old girl who was treated for diarrhea and high fever, developed tachycardia, systolic blood pressure of 80 and evolving rash on her chest and abdomen. तो आप इसमें लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट जो लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें आपको उसमें आइडेंटिफाई होती है उसको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि दिस इज द द लाइफ थ्रेटनिंग थिंग दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट. सही. तो बस मकसद ये था कि इसी तरह के सिनेरियोज आपके पास होंगे. ठीक है? तो बेसिकली जो गोल है दैट इज टू अवॉइड मॉर्बिडिटी एंड प्रिवेंट मॉर्टेलिटी. ठीक है? दैट इज द गोल ऑफ द PFCCS. And as I mentioned earlier, it's not a substitute that you become an intensivist from attending this course. So it's not a substitute for critical care or a consultation. So it's just like early identification. It's mainly targeted for the non-intensivist or the healthcare professional who is certified in BLS, APLS, so pediatric advanced life support है, and those who do not routinely care for the pediatric patients. ठीक है? तो जो अगर पहले इंटेंसिव केयर में काम कर रहे हैं तो मे बी इस कोर्स को अटेंड कर पहले में फ़ायदा ज़रूरी हमेशा होता है, बट इट्स नॉट के इतना उनको नहीं होगा जितना जो प्राइमरी केयर प्रोवाइडर है उनको होगा. सो प्रोलॉन्ग केयर इज नॉट द प्राइमरी एम्फेसिस. So these are the steps. ठीक है? BLS, as we know, it's mandatory for all healthcare providers. जो भी है like suppose अब तो हॉस्पिटल में नर्स है और इवन जो पोर्टर तक हैं भी सारे BLS trained होते हैं. We expect like जो अच्छी जगह पे काम करते हैं we should be BLS trained. Then the next step is the pediatric advanced life support or ATLS or APLS.
तो मोस्टली इंस्टीट्यूशन में इनकी भी सर्टिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ द PFCCS एंड फिर PICU आता है, ठीक है। और लाइक यू नो BLS आपने प्रोवाइड किया, फिर किसी एडवांस लाइक इधर आपको अवेलेबल हो गई, आपने रेफ़र किया कि पाल्स और ये चीज़ें उनको प्रोवाइड हो गई पेशेंट को, फिर PFCCS वाले सर्विसेज आपने प्रोवाइड कर दिए एंड देन यू गो टू PICU, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द चेन रन्स। अच्छा, direct those of you who have attended PALS course, so they must be aware about the direct approach. ठीक है, direct is about detection, intervention, reassessment, and then E and C is for effective communication and teamwork. ठीक है, डिटेक्शन इज बेसिकली असेसमेंट, कि आप गए और उसने राइट अवे एक क्विक आपने ग्लांस डाला, उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया, यू डिटेक्टेड समथिंग, आपने आइडेंटिफाई किया वेदर इट्स एन एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट और नो, और उसी टाइम आपने अर्ली इंटरवेंशन, आपने कहा कि जी दिस पेशेंट कुड बी अ सिक पेशेंट, आपने उसको ऑक्सीजन स्टार्ट की, आपने उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट की, सो दैट्स द डिटेक्शन इंटरवेंशन पार्ट। एंड देन विद ईच स्टेप यू आर रीअसेसिंग कि आपकी इंटरवेंशन से कोई फायदा हो रहा है उसको या नहीं है, आप बेहतर हो रहा है या खराब हो रहा है, ठीक है। एंड दिस चेंज रन्स विद ईच स्टेप, यू हैव टू डिटेक्ट, इंटरवीन, रीअसेस। ये आपका हर सिनेरियो में डिटेल में डिस्कस होगा, बट जस्ट फॉर नाउ कि लाइक आप कर लें कि दिस विल बी द अप्रोच, दिस इज अप्रोच फॉर PALS एंड ऑल्सो फॉर PFCCS, ठीक है। तो आप इसके साथ यूज टू हो जाएं कि और कोर्स विल रन थ्रू दिस डायरेक्ट अप्रोच। presentations होंगी tailored to the participant, ठीक है। select topics हैं with major issues emphasized, sepsis है, sedation है, ventilation है, respiratory failure, ये सारे होंगे। और text आपको मिल चुकी है and like you know वहाँ से उसको आप as a reference use कर सकते हो, जो टेस्ट I'm sure आपने उसको go through किया होगा। Requirement as I mentioned, attendance is mandatory, ठीक है। फिर participation in each of the both presentation and in the skill station। फिर टेस्ट completion है, course evaluation and feedback at the end हम भी आपसे लेंगे। फिर सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल मेडिसिन का भी आपके पास एक ईमेल आएगी, उसको आपने अपना फीडबैक देना है कि whether you learned something new, आपको अच्छा लगा, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्रूव करने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आपको प्री टेस्ट हमने जो दिया है ये हम आपसे लेंगे ब्रेक टाइम में वापस, ठीक है। इन द मीन टाइम हमारा कोर्स चलता रहेगा, आप अपना प्री टेस्ट करते रहें, ठीक है। ब्रेक टाइम जब होगा तो आपसे टेस्ट ले लेंगे एंड देन विल प्रोसीड टू द प्रेजेंटेशंस, ठीक है। आई होप के सर ये मोस्ट ऑफ द एजेंडा आई एम श्योर आपके पास है, बस इसी को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, ठीक है। बस ब्रेक टाइम को हमने लिमिट करना है, जो टी ब्रेक्स हैं दैट विल बी अ रनिंग टी, आप किसी को चाहिए पीछे टी लगी हुई है आप ले सकते हैं। सिर्फ जो लंच एंड प्रेयर ब्रेक का टाइम है उसको भी हम ट्राई करेंगे ताकि लाइक यू नो चीज़ें जितनी भी स्क्वीज हो सकें। डेज आर शॉर्ट एंड ठीक है, थैंक यू।